Okay. So, hello everyone. Just a minute. Good morning everyone. Good morning guys. Okay, so ठीक है जल्दी जल्दी connect हो जाओ so that we can start the class. कहीं कौन असुविधा है डार्क चॉकलेट सहित So, hello everyone. I'm Sudipta, welcoming you all to Vedang Teaching powered by Vedang Institute of Technology. Okay. Yeah, I'm good and I'm doing well. Something is angry mood nahi. Don't worry, something is I'm in a very jolly mood. Chala. Start kariba then class. So geography ra kichi atmosphere level ra questions apan manak pe asile ki asichi. So before that apan mane jani chanti amara Vedang classes run Vedang teachings ra batches launch hechi, that is 3499 achi. Mahapack ra price ara validity rahuchi 1.5 year. 1.5 year भितर स्टेट विशेष जिते भी आपण मानकर रहिबो माने ओडिसा गवर्नमेंट अंडर रे जते भी एग्जामिनेशंस आसीबो सब यार अंडर रे आपनकर कंप्लीट हेइसबो ऑलमोस्ट 10 to 12 एग्जामिनेशन तो आसी जाउछे. देन उत्कर्ष एई हमर उत्कर्ष बैच ओटा सीजीएल बैच या फिर प्रभात बैच ए सब आपनकर महापैक अंडर रे आसी जाउछे. एंड बैच परचेज कला बेले किछि भी क्वेरी आसुछे देन ए कांटेक्ट करिवे नंबर को एंड इजीली एक्सेस करि परिबे. सेम हमर कोन होची ना मैम पीसीएम सीबीजेड एंड आर्ट्स पई वेदांग कोन होची ना द्रोण 1.0 बैच लॉन्च हो जाईची जहार प्राइस होची 1499 एंड वैलिडिटी ओनली 1 year. क्लियर? ओके. सो हमर क्लासेस रहउची दिस वाज सॉरी फॉर दैट एटा वेदांग क्लासेस रो लगे दीची बट स्टिल आपण माने चेक करि परिबे. So first question of today's class is ready study go. So चलो the first question कौन अच्छी टिके देखो. Okay, start करो. The atmosphere is held to earth. Sorry, the atmosphere is held to the earth by. So atmosphere हमारा कौन ना मैम अर्थ ऊपर अच्छी बट atmosphere हम अर्थ से तो कनेक्ट है कि केमिति अच्छी कहा द्वारा एटा कनेक्ट है कि अच्छी इवन आमे सब रहुचे आमे माटी ऊपर छिड़ा हेचे ना के पड़ी जाउचे तो आमे जो स्टैंडिंग कंडीशन में रहुचे फॉर व्हाट ना फॉर द ग्रेविटी ऑफ व्हाट ना अर्थ रो ग्रेविटी पई अर्थ हैज द माध्याकर्षण शक्ति जोटा को हम ओडिया रे कहूचे. So the gravity is responsible for the atmosphere held on the earth. Okay. So हमें कह परिबा that what is gravitational force? The force that attracts all objects towards the center of the earth is the gravitational force. Clear? भूल तो हबो पाठ रे जदी मन न दबो भूल तो हबो. So हमें कह परिबा what is its importance ना gravity that prevents the atmospheric gases
ग्रेविटी हमर कोन करे ना प्रिवेंट करे एटमॉस्फेरिक गैसेस को फ्रॉम escaping into outer space. That means हमर जति कि एटमॉस्फेरिक गैसेस रहउची जोटा कि हम पई एसेंशियल अछि सेटा कोन रहे ना हमर एटमॉस्फेयर भीतर रहे ना कि आउटर स्पेस को चली जाए जदि हमर ग्रेविटी न थांता ताहले हम जते भी हमर एसेंशियल ऑक्सीजन हैला या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हैला दीटा मेन हमर रेस्पिरेशन गैसेस हम जानि छी सो दीटा देखो जदि हमर आउटर स्पेस को पड़िबा ताहले हमर लिविंग कंडीशन केमिति सर्वाइवल कंडीशन कोन एग्जिस्ट हे पारि थांता कि नो मैम हे पारि न थांता so this is the gravity is responsible for that and हमर कहिले gravity सहित टिके रिलेट करे कि gravity को किए हमर कोन ना मैम डिस्कवर करिथिले ना न्यूटन्स करिथिले the Newton's universal law of gravitational that governs the attraction between the earth and the atmosphere कोन आफ्टर सहायता करिथिले राइट so the gravity किए करिथिले ना मैम न्यूटन okay that connect what second discover करिथिले now there is the gravity that connect the outer atmosphere or the atmosphere with the earth so the connection between the earth and what the ma'am atmosphere के करिथिले ना मैम न्यूटन so same way रे मते कहिलो मैम रोटेशन जदि कहूची मते कुओ ऑप्शन बी कोन रहउची ना मैम रोटेशन ऑफ अर्थ ए रोटेशन ऑफ अर्थ कोन अछि रोटेशन ऑफ अर्थ हमें जानि छै कि कोन मैम दिस इज नथिंग बट द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस जोटा कि हमरा 24 आवर्स लागे जोटा हमरा डे नाइट हुए बट जदि एटा अपन को रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहला रोटेशन हबो कोन ना मैम जते बेले ओन एक्सिस हमें कहूचे कोन कहूचे ना जते बेले ओन एक्सिस कहूचे जोटा कि हम केते ना मैम 24 आवर्स लागुची ड्यू टू दैट हमरा कोन ना मैम डे एंड नाइट हे पारुची तो ताको हम रिलेट कहूचे देन रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ हमें कहा को कहूचे मते को रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहा को कहूचे ना मैम दैट मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन दैट मींस 365 डेज जोटा को हमको लागुची केते ना मैम 365 डेज लागुची दैट मींस आपण माने कोन ना मैम सन सहित को कंपेयर करके हम रिवोल्यूशन को माने रखिबो and अर्थ निजो विषय रे एक्सप्लेन करिवो ताको हम रोटेशन ऑफ अर्थ माने रखिबो बट मते कहले जो रोटेशन ऑफ अर्थ एटा को टाइप रो होची ना मैम दिस इज जदि अपन को फोर्स पचारिला दिस कॉजेस ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स कोन होइबो ना मैम दिस इज ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स कोन ना मैम रोटेशन ऑफ अर्थ होइबो दिस इज ड्यू टू द कोरियोलिस ऑफ द फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द wind patterns and the ocean current clear जो थ्रे हमर को सब चेंज हुए 24 आवर्स डे एंड नाइट हुए बट रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अपन माने जानि सेंती दैट इंपोर्टेंस बिकॉज़ दैट कॉजेस द सीजन्स हमर समर हैला विंटर हैला स्प्रिंग हैला ऑटम हैला एवरीथिंग तब हमर कॉजेस आसी कोन ना 365 डेज हमर सीजन चेंज होची एंड इट impacts the distribution of the solar radiation but atmosphere सहित हम जदि रिलेट करू छ का ना ग्रेविटी सहित बट सोलर रेडिएशन को हम कोन करू छ ना मैम चेंज कर दउ छ दैट एटमॉस्फेयर लेवल सहित लाइक रिवोल्यूशन सहित सोलर रेडिएशन में इनडायरेक्ट लिंक रहू छी बट जदि हम सोलर रेडिएशन ओनली कहू छ दैट इज द एनर्जी emitted by the sun in the form of UV visible or the infrared केमिति रहू छी ना UV visible and infrared भाबरे आपण माने एग्जांपल नै परिबे UV हैला और दैट इज infrared am I clear एतिकी बुझी गला व्हाट इज ग्रेविटी बाहर करथिले के व्हाट इज रोटेशन ऑफ अर्थ व्हाट इज रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड व्हाट इज सोलर रेडिएशन क्लियर जिबा नेक्स्ट मते को द मोस्ट abundant gas in the earth atmosphere the most abundant gas in the earth atmosphere हमर कोटा रहिबो most abundant gas in the earth atmosphere very good that is नाइट्रोजन एक्जेक्टली कौन ना मैम नाइट्रोजन रहिबो बट मते को ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऊपर को आसीबा बट बिफोर दैट ऑक्सीजन अछि तो ऑक्सीजन ऑप्शन को आसा ऑक्सीजन हमर एटमॉस्फेयर रे केते परसेंटेज प्रेजेंट अछि मते कहिलो ऑक्सीजन को हम आउ कोन कहै ना मैम ऑक्सीजन को हम गोटे रिएक्टिव गैस बोली जानि छै दैट इज मेकिंग ऑफ केते ना
21 approximately 21% amar kouthi na ma'am atmosphere re present rahuchi ha na nahi yes ma'am what is the importance of this na this is the essential for the respiration and the combustion so oxygen ko ame kaha sahita relate karuche na ma'am eta ko ame respiration sahita ame mane kona taku inhale karuche respiration sahita and kaha sahita na ma'am combustion sahita क्लियर कहबो ना मैम ऑक्सीजन को करूचे जदि हमें कहिबा ऑक्सीजन साइकिल दैट रेगुलेट्स इट्स बैलेंस थ्रू द फोटोसिंथेसिस होजी ना नहीं मैम कारण ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस रे हम रिलीज हो जाउची व्हेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड इज द एसेंशियल एलिमेंट इज द एसेंशियल गैस इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस सो आपण माने कहि परिबे फोटोसिंथेसिस रे हमर ऑक्सीजन रो रोल अछि ना नहीं यस मैम अछि बिकॉज़ इट इज अ बाय प्रोडक्ट हमर को रिलीज हो जाउची सो राइट आंसर कोन अछि मैम नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन को कोन कहू जे केते परसेंट हमर एटमॉस्फेयर रे प्रेजेंट अछि वेरी गुड अप्रोक्सीमेटली केते ना मैम 78% हमर प्रेजेंट अछि कोन ना नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर क्लियर वेरी गुड सो एटा डाइल्यूट है कि अछि कहा सहित ना ऑक्सीजन डाइल्यूट with the oxygen to prevent the rapid combustion otherwise जदि simply हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट थांता ताहले combustion होइबारे बहुत प्रॉब्लम होतांदा या फिर combustion rapidly हो जाइथांदा सो प्रिवेंट करिबा पई हमर कोन combustion rapidly हेबा पई हमर एटा को डाइल्यूट होई कि रहिता है कोथि एटमॉस्फेयर रे ऑक्सीजन सहित this is a vital for the proteins and the कोन ना डीएनए सहित सो नाइट्रोजन को हम रिलेट करि परिबा कोन ना नाइट्रोजन साइकिल that is DNA माने पडुची सेइथि हमर कोन होची ना मैम नाइट्रोजन साइकिल इज रिस्पांसिबल फॉर दैट ता सहित हम रिलेट करि परिया प्रोटीन्स एज वेल एज नाइट्रोजन साइकिल क्लियर वेरी गुड नाइट्रोजन फिक्सेशन कोथि ना मैम नाइट्रोजन फिक्सेशन एग्रीकल्चर रे हुए ता सहित भी मन रखि दा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्लियर देन को कार्बन डाइऑक्साइड को रिलेट करू से कहां सहित कार्बन डाइऑक्साइड को ऑलरेडी आपण माने कहते बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट रो अछि ऑलमोस्ट 0.04 हमर कोन अछि ना कार्बन डाइऑक्साइड कोठी रे ना मैम एटमॉस्फेयर रे तो आर्गन को आपण माने रिलेट कर परिबे कार्बन डाइऑक्साइड आपण माने जानि से दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस दैट रेगुलेट द अर्थ टेंपरेचर आल्सो and this is essential for the photosynthesis carbon dioxide is the essential element is the essential gases for the photosynthesis then mate kuha argon no role ame kon कहूचे and yes carbon dioxide से टिके मन पके देला फिल्टर प्रोटोकॉल काली आपण माने पढैथिनी कोन पढैथिनी ना मैम फिल्टर प्रोटोकॉल केते बेले इयर टिके मन पके दे ना 1997 मसिया रे केते आसीथिला ना मैम फिल्टर प्रोटोकॉल 1997 में this is related with the carbon dioxide emission and तांकर कोन ना केति की स्टॉप होई पारिबो emission then मते को या सहित पेरिस एग्रीमेंट करथिली पेरिस एग्रीमेंट 2015 कोन COP20 करथिली COP21 सहित करथिली 2015 रे हमर कोन ना मैम पेरिस एग्रीमेंट को रिलेट करिवो that is also related with the carbon dioxide clear बुझियला very good that always related about the carbon dioxide emission next मतलब को आर्गन को हमें कौन कहूचे ना मैम दिस इज नोन एज अ नोबल गैस ए आर्गन को हमें कौन कहूचे मैम दिस इज अ नोबल गैस ओके नोबल गैस एंड एटा प्रेजेंट रहउची केते अमाउंट रो एटमॉस्फेयर रे ना मैम ऑलमोस्ट 0.93% हमर रहउची कोडी ना एटमॉस्फेयर रे प्रेजेंस रहउची एंड एटा हमर कोथ रे यूज आसे ना जते केमिकली दिस इज अ केमिकली इनफ गैस वी नो दैट एंड दिस इज यूज्ड एज अ वेल्डिंग पर्पस रे आपण माने जानि थिबे सोल्डिंग गोटे जिंस वेल्डिंग गोटे जिंस सो वेल्डिंग हैला माने बहुत सूक्ष्म तारटा भी जते बेले आपण माने जॉइंट करसन दैट इज द वेल्डिंग बलून सहित हीलियम संतोष प्रधान आर्गन नाही बलून सहित हीलियम को रिलेट करिबो दैट इज अ गैस आल्सो बट दैट इज नॉट द आर्गन ओके सो इलेक्ट्रिक वाल्व एग्जैक्टली दैट इज इलेक्ट्रिक वाल्व हैला लाइट वाल्व हैला एथि हमें कोन यूज करू छी ना मैम वेल्डिंग पर्पस रे आर्गन को यूज करू छी एति की मने रहिबो yes light bulb रे argon use हुए चलो next मते which component of the atmosphere shows the highest variation with place and time tell me which component of atmosphere shows the highest variation with place and time से मते relate कला कहा को कहूचे that has the highest variation over that is the
very good, that is the water vapor. कौन होची ना पिले माने एटा होची water vapor, but nitrogen काहे रहउनी कारण नाइट्रोजन तो 78% रहउची, that is the constant माने constant अछि हमर everywhere constant रहउची, stable रहउची, that is non reactive also, so this is very least variation. but एटु कोन पचाछि ना highest variation पचारिछि ऑक्सीजन हबने का ऑक्सीजन भी 21% रहउची, so right कोन हबो ना मैम water vapor हबो काहेकि ना the gaseous form of the water is the water vapor, and हमें देखुचे almost हमें कहबे 0 to 4% varies केते करे ना 0 to 4% always vary करे, that causes the humidity, the clouds and rainfall. कोन करूची ना मैम ये humidity form करूची, humidity form करूची, clouds form करूची, and कौन form करूची ना मैम rainfall भी होउची because of this कौन ना water vapor पाई ही होउची. clear? so हमें कहि परिबा कि the Clausius Clapeyron equation explains the water vapor capacity with the temperature. करूची नहीं? yes मैम करूची. and हमें कहि परिबा कार्बन डाइऑक्साइड सहित आपण माने पळेबे कोन ना photosynthesis पार्ट. so तार बेस्ट explanation photosynthesis रे भलो से हेई परिबो. clear? चलो next मते कुआ. the lower atmosphere where gases are well mixed due to the turbulence is called. in the lower atmosphere, tell me, in the lower atmosphere, yes, so in the lower atmosphere where gases are well mixed due to the turbulence is called. like हमरा लोअर एटमॉस्फेयर आपण में देखिबे गैसेस माने कोन माने परस्पर भीतर इंटरमिक्स हो जांती, पर जते ऊपर को हम छिबे ताकर वेटर अनुसार से माने ऊपर को आसीबे जते ताकर लाइट रहबे से तळ माने लाइट रहबे जते से ऊपर को जिबे जते वेटर अनुसार से माने कोन तळे रहबे. सो यांका अपन हमें कोन कहउचे दैट इज कोठी रहउची नो हेटेरोस्फीयर को रिलेट करिबा नाही, दैट इज वेरी गुड राजेश. हेटेरोस्फीयर नाही रे बाबा, सेटा होमोस्फीयर हबो कोन ना मैम होमोस्फीयर. हेटेरोस्फीयर कोन ना द अपर एटमॉस्फेयर एबव 80 किलोमीटर ऊपर को जदि आपण जिबे ताहाले आपण माने कोन कहबे ना 80 किलोमीटर रो एबव को जदि मैम हमें जिबु ताहाले हमें हेटेरोस्फीयर पाइबु, जोटे गैसेस अरेंज्ड बाय द मोलेकुलर वेट कोन तांकर मोलेकुलर वेट को नेकी गैसेस माने अरेंज हेई थांती. लाइट गैसेस लाइक द हाइड्रोजन हीलियम ए माने सब डोमिनेंट हेई कि थांती माने बहुत ऊपर माने थांती. नेक्स्ट माने को आयोनोस्फीयर को हमें कोन कहउचे Ionosphere, that is the part of homosphere. yes or no कारण हम 60 to 1000 किलोमीटर भीतर हमर कोन आसे ना मैम ionosphere. so this is present in 60 to 1000 kilometer ionosphere, and this is the part of what na ma'am thermosphere. so this is rich in the ions and it reflects what na hamara ionosphere re reflect kon हुए na ma'am this is the radio waves को reflect करे, reflects radio waves. clear? is that clear? and this is important for communication also. हमारा रेडियो वेव्स अछि माने ये कोन ना कम्युनिकेशन पई बहुत इंपोर्टेंट रहबो. व्हाट इज एक्सोस्फीयर इज रिलेटेड टू मते कुहो. एक्सोस्फीयर होमोस्फीयर तो ऑलरेडी कहि देली, दैट इज द लोअर एटमॉस्फेयर मन रखो अप टू 80 किलोमीटर पर्यंत. केते ना मैम होमोस्फीयर हमरा अप टू 8 किलोमीटर. जेते 80 किलोमीटर ऊपर को आपण माने जिबे कोन पाइबे ना मैम हेटेरोस्फीयर पाइबे. बट जेते अप टू आपण माने को कहि दबो अप टू माने ग्राउंड लेवल सी लेवल रो अप टू 80 किलोमीटर आपण माने जिबे कोन पाइबे अप टू 80 किलोमीटर गले होमोस्फीयर को पाइबे, जोठी हमरा कोन गैसेस आर द माने इंटरचेंज होई थाए. क्लियर? नेक्स्ट मते कुहो दिस इज द यूनिफॉर्म गैस कंपोजिशन और नॉट. हमरो होमोस्फीयर रे कोन हुए ना मैम अप टू 80 किलोमीटर पर्यंत थाए, एंड दिस इज द यूनिफॉर्म गैस कंपोजिशन, and it include करूची था आगे ना ट्रोपोस्फीयर को, स्ट्रेटोस्फीयर को and the मेसोस्फीयर को ये include करूची. so it is included the troposphere, stratosphere and the mesosphere. ए तीनटा स्फीयर को कोन ये इंक्लूड करके रखुची. एंड एक्सोस्फीयर विषय हमें कोन कहि परिबा ना मैम दिस इज द अपर लेयर, माने अपर लेयर मीन दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर हमें कहि परिबा एबव केते ना मैम 700 किलोमीटर ऊपर को हमें कंसीडर करूची. दिस इज द एक्सोस्फीयर. देन molecules हमर कोन रुहे ना एस्केप रुहे इनटू द आउटर स्पेस. सो molecules माने कोन रुहंदी दे आर एस्केप इन द आउटर स्पेस. क्लियर? जिबा देखो नेक्स्ट मते कुआ. बट कर्मन लाइन माने पका एग्जैक्टली 80 टू 100 किलोमीटर भीतर आपण मानकर कर्मन लाइन आसे, जोटु की माने सी लेवल रो 80 टू 100 किलोमीटर भीतर कर्मन लाइन आसे, एंड से कर्मन लाइन ऊपर को हम कंसीडर करछे दिस इज द स्पेस. ओके
So next mate ko which noble gas is most abundant in the atmosphere? Ko noble gas amara most abundantly present in the atmosphere? Tell me the right answer. Very good. That is the argon. Why not neon? Karan neon present in very traces like 0.0018 I think that is present in very like traces amount that is used in advertising the signs like ame kon kaya neon lights apan man dekhithibe जो रेडियम लाइट उडा आसे सेटा को अपन माने केमति यूज करसन ना दैट इज फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पस रे नियन को यूज करछे बट आर्गन को हमें केते ना 0.93% जेते हमर गैसेस इनॉट गैसेस अछंती नोबल गैसेस अछंती समान को भीतरु अधिक अमाउंट रो जदी एटमॉस्फेयर रे किछि प्रेजेंट अछि को गैसेस ना मैन दैट इज द आर्गन गैसेस क्लियर दैट इज हाईएस्ट अमंग द नोबल गैसेस and this is inert because आमे ताको यूज करि पारुछे ड्यू टू द inert in nature आमे ताको वेल्डिंग रे यूज करि पारुछे and fluorescent lamp रे भी जेंति कि लाइट बल्ब रे भी ताको आमे यूज करि पारुछे helium that is very traces amount रे पाइबा krypton भी आमे very traces amount रे helium जेमिति कि राजेश कहउतिले कोन helium को आमे कोठी ना बलून रे यूज करूछे क्रायोजेनिक इंजिन रे भी आमे यूज करूछे बलून्स रे क्रायोजेनिक रे भी आमे आको कोन ना हीलियम्स को यूज करू छी क्रिस्टल कोन रहउची ना ओनली यूज इन द लाइटिंग फोटोग्राफी एथि आमे कोन क्रिस्टल को यूज करू छी हैला लाइटिंग हैला फोटोग्राफी हैला एथि आमे का को ना मैम क्रिस्टल को यूज करू छी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ अच्छा पहिला मते अर्थ सहित जति कि हमर लेयर केते छै हमें 5टा काउंट करछ कोन ना ट्रोपोस्फियर ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर कंसीडर करूछ सो स्टार्टिंग के रहला ऑब्वियसली ट्रोपोस्फियर बट ऑप्शन अपन माने कोन अछि ऑप्शन में कोन अछि मते कहू राइट आंसर कोन होबा मते कहू वेरी गुड दैट इज द ट्रोपोस्फियर कोन होबा ना मैम ट्रोपोस्फियर 0 माने तळु 8 किलोमीटर पर्यंत हमें कहि परिबा ट्रोपोस्फियर लेयर अछि एट द पोल्स only 0 to 8 जदि अपन माने को पोल्स रे पचाला ट्रोपोस्फियर सेटा हमर 0 to 8 किलोमीटर अछि कोठी ना मैम पोल्स रे ओनली आ जदि हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर कथा कहबा जदि इक्वेटर पाखरे कहबा एटा केते हिजिबो ना 0 to 18 किलोमीटर हिजिबो एट इक्वेटर दिस इज अ इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस कीप इन योर माइंड जदि इक्वेटर कथा पचारिला कोन कहबो ना मैम दैट इज 0 to 80 जदि पोल कथा कहला ताहले हम 0 to 8 को कंसीडर करबो क्लियर एंड ए ट्रोपोस्फियर हमको कोथरे हेल्प करूची ना वेदर फोरकास्टिंग रे हेल्प करूची रेन हैला क्लाउड हैला स्टॉर्म हैला ए सब हमर कोठी होची ना ट्रोपोस्फियर रे होची एंड दैट होल्ड द 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास के ना मैम ट्रोपोस्फियर ही रखुची स्ट्रेटोस्फियर इज इंपोर्टेंट फॉर व्हाट मते को स्ट्रेटोस्फियर सब ऑलरेडी अपन माने कहि देछि दैट इज अपन माने कंसीडर करिवे 10 to 15 किलोमीटर above the troposphere to start करिवे 10 to 15 किलोमीटर हमर रहउछि स्ट्रेटोस्फियर and that contains what now the ozone layer contain करूछि stratosphere that absorb the harmful UV radiation also किए हमर stratosphere and हमें कहि परिबा this is the हमर कोन relatively हमें कहि परिबा this is stable and hence used is for the jet aircraft find हमें यूज करूचे jet aircraft flight हमर कोथरे ना मैम यूज होची stratosphere रे jet सहित रिलेट करिवो सेम जदि मेसोस्फियर कथा कहला कोन कहबो यस एरोप्लेन भी होची खुशी सो हमर मेसोस्फियर हेले कोन कहछ ना ता ऊपर को से 10 to 50 हैला ता ऊपर को 50 to 80 कोन ना मैम याको हम 50 to 80 पर्यंत कंसीडर करूचे as the layer is spreading above the 50 to 80 kilometers that is the mesosphere clear so that is the coldest layer बोले हमें कंसीडर करूचे coldest layer होची क्या को हमें कंसीडर करूचे ना मैम मेसोस्फियर को जदि कोल्डेस्ट लेयर बोले हमें कंसीडर कर केते होची कहला दैट इज -90 डिग्री सेल्सियस इमेजिन करि पारो -90 डिग्री सेल्सियस and जो meteors माने हमर आसुसंती बर्न होचंती एटा कोठी हियर ड्यू टू द फ्रिक्शन सो meteors माने भी आसुसंती meteors are born here due to what मन रखिता due to the friction जदि आपण माने क्वेश्चन पछारिला ना meteors are born due to what that is for the friction एबे हमें जो क्वेश्चन सब करूचे कोन की सब तो 9 10 8 9 10 रो क्वेश्चन सी
बस आपण माने टच छाडी जाईछि सेति पय बुझी पारु ना या फिर आंसर आपनकर भूल होछि नथिंग एल्स सो आपण माने कोंतु थर्मोस्फीयर को हमें कंसीडर करछे जते बेले सेटा 80 पर्यंत जाउथबो ऑब्वियसली 80 रो ऊपर को जीवो दैट इज 82 केते ना मैम 700 किलोमीटर पर्यंत थर्मोस्फीयर को हमें कंसीडर करूचे देन 700 रो अबव हेले हमें कोन एक्सोस्फीयर को कंसीडर करूचे क्लियर वेरी गुड एंड जो हमर आयोनोस्फीयर अछि रेडियो कम्युनिकेशन होछि एटा कोठी ना मैम आयोनोस्फीयर आयोनोस्फीयर हैला एंड रेडियो कम्युनिकेशन हैला एटा हमर कोठी ना मैम थर्मोस्फीयर रे होछि क्लियर चलो नेक्स्ट मते को द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर इज नोन एज ट्रोपोस्फीयर ऊपर जो लेवल अछि हमें ताको कोन कहूचे एबे ही सब गोटे गोटे करी पढेली फिर भी को ट्रोपोस्फीयर ऊपर लेयर को हमें कोन कहूचे द अपर लिमिट सॉरी अपर लेयर कथा पचारनी एटा तार लिमिट पचारछि ताको हमें कोन कहूचे लिमिट कथा पचारछि सॉरी दैट लेयर कथा पचारिनी एंड इवन एटा लेयर भी मेंशन नहीं सो को दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फीयर रो अपर लिमिट को हमें कोन कहूचे ता ऊपर को गले हमें कोन कहूचे ना मैम स्ट्रेटोस्फीयर पाउचे से जो लिमिट ता सेट होईची दैट इज नोन एज द ट्रोपोपॉज जोठी ट्रोपोस्फीयर को पॉज दिया जाउची जोठी ट्रोपोस्फीयर को पॉज दिया जाउची दैट इज द ट्रोपोपॉज हबो केमिति एटा सोनाली पंडा स्ट्रेटोपॉज केमिति हबो आमे जदी कहबा स्ट्रेटोस्फीयर रो लिमिट कोठी सेट हमरा सेट होची दैट इज द स्ट्रेटोपॉज क्लियर मेजोस्फीयर हेले दैट इज मेजोपॉज जो भी तार लिमिट आगु को गले हमें नेक्स्ट लेयर पाइबा दैट इज द पॉज एरिया ओके वेरी गुड सो दैट इज द थिन बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर ताको हमें पॉज भाबरे नउची क्लियर वेरी गुड दैट एक्ट एज अ लीड होले ताको हमें प्रिवेंट करी की रखुची वर्टिकल हमर को मिक्सिंग ऑफ द वेदर सिस्टम ताको मिक्स करिबार गोटे थिन लेयर आसुची दैट इज द ट्रोपोपॉज क्लियर वेरी गुड चलो आउ किछ दरकार मेजोपॉज भी सेम आयोनोपॉज भी सेम स्ट्रेटोपॉज भी सेम ओके चलो नेक्स्ट मते को वेदर फेनोमेना अकर इन व्हिच लेयर अच्छा कहले वेदर फेनोमेना हमर को लेयर आसुची एबे ही कहितली जते बेले सब लेयर विषय बुझौतली सो वेदर फेनोमेना को लेयर आसुची दैट इज हमर पाखरे जोटा सबुठु अछि जोटा हम पाखरे अछि क्लाउड हमर आसुची वर्षा होउची हमें जानूचे वर्षा सीजन आसिला खरा देखुचे जानूचे खरा सीजन आसिला शीत कुहुडी पडुची हमें जानूचे शीत होला दैट मींस हमरा को लेयर रहबो ऑब्वियसली दैट इज इन द ट्रोपोस्फीयर लेयर कोड रहबो ऑल वेदर लाइक क्लाउड्स होला रेनफॉल होला स्टॉर्म्स होला एवरीथिंग इज occurs here that's why we know that is the troposphere is known as the weather phenomenon layer of the atmosphere clear the reason called by because of the vertical convection due to the weather from the earth's surface clear चलो स्ट्रेटोस्फीयर सहित का ना मैम ओजोन को हमें रिलेट करि पारि क्लियर चलो हमर मेसोस्फीयर सहित कोन ना मेटियर को रिलेट करतबो एक्सोस्फीयर हेले दैट इज द आउटर स्पेस चलो नेक्स्ट मते कहतो ओजोन लेयर इज फाउंड इन अच्छा एबे कह दियो ओजोन लेयर संगे संगे लिखिली ओजोन लेयर को एटमॉस्फेयर लेयर हमर ओजोन लेयर प्रेजेंट अछि एबे ही लिखिली ट्रोपोस्फीयर पय आपण वेदर को रिलेट करिवे so stratosphere में कितने ना मैम ओजोन लेयर इज लोकेटेड जस्ट 15 to 35 किलोमीटर भीतर कोठी ना स्ट्रेटोस्फीयर 15 to 35 किलोमीटर अबव द स्ट्रेटोस्फीयर हमर प्रेजेंट रहिबो कोन ना ओजोन लेयर दैट इज द फील्ड that seals the earth from the harmful UV radiations UVB and UVC rays clear and that protected under what the Montreal Protocol 1997 1987 ना 97 ने कंफ्यूज हो गलो मॉन्ट्रियल 1987 आई थिंक ठीक है माने पकेला 1987 ना 1997 क्लोरोफ्लोरोकार्बन सहित ता कंट्रोल करछे मॉन्ट्रियल पेरिस तो 2015 ना के ठीक है माने पका 1987 ना 97 या दैट इज 1987 तो आपको अपन माने का सहित ना मैम मॉन्ट्रियल सहित हम याको रिलेट करूचे 1987 सहित कोन ना मैम सीएफसी सहित सीएफसी रो कंट्रोल को नहीं की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेतिला क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज अबाउट ट्रोपोस्फियर हाइट केते रहउची हमर इक्वेटर रे ट्रोपोस्फियर हाइट केते रहउची मते टिके खुआ केते रहइबो कारण मैम कोन बचाची ट्रोपोस्फियर तो हां ट्रोपोस्फियर इक्वेटर रे आपण माने को कहली एबे ही कहली केते रहिबो yes that is almost आपण 18 पर्यंत हाईएस्ट केते ना 18 पर्यंत ही जेबे द ट्रूली हमें कहिबा
for the equator region our equator regions fine due to the convection of the currents and the strong solar heating amar kete rahuchi na ma'am 16 to 18 kilometer rahuchi that again expands rahuchi why na because of the tropical weather is intense clear very good chala next mate ko at the poles the height of the troposphere is about it important question sethita apan manku dui thara kari anichi so equator kahila that is 16 to 18 kahila ଆମର poles ହେଲେ କେତେ କହିବା ନା ମ୍ୟାମ୍ 0 to 18 କହୁଥିଲୁ then କଣ ମ୍ୟାମ୍ ତାକୁ 8 to above କହୁଥିଲୁ 18 that is 16 to 18 that means ଆପଣ ମାନେ କଣ ନା 8 kilometer ଯୋଉଟା କି latest ସେଇଟାକୁ ଚୁଜ କରିବେ okay 8 kilometer is the highest one that at the pole only that means the solar heating is weak at there less convection ଆସିଯାଏ that's why hence ଆମେ କହିପାରିବା this is the troposphere is the thinnest here at very called 8 kilometer only clear very good so polar regions show the stable cold atmospheric conditions over the polar regions okay 12 kilometer hele that is the type of the ame koi pariba that is the mid latitude re next mate ko the coldest layer sorry answer deli ta yes the coldest layer of the atmosphere ra sabutu coldest layer ame kaha ko कहूचे मैम जे लाइक करिनी ताकू पढेइबे नाही पढ़ौची तो सब बाकी तम मानकर विवेक बुझिल तम मानकर विवेक कर न कर कौन करी तुम मान चलो मत कह द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी गुड कहा को हमें कंसीडर करूचे ना मैम द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज व्हाट ना मेसोस्फीयर व्हाई बिकॉज़ दिस इज आपण मानु के बे ही कहिथिली ना मैम -90 डिग्री सेल्सियस एठी थाए ह्यूमन रो नॉर्मल सर्वाइवल कंडीशन बाहर नोबडी कैन सर्वाइव ओवर देयर राइट सो दैट इज लैक्स द ग्रीन हाउस गैसेस एंड हमें कहि परिबा दैट इज द लिटिल जोन रैपिड हीट हुए अधिक so important for the burning the meteors ताकू आपण माने मेसोस्फीयर एम फॉर मेसोस्फीयर एम फॉर मेटियोर्स कहिता आपण माने कोन ना मैम आपको हमें कनेक्ट करि परिबु क्लियर ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर थर्मोस्फीयर ऑलरेडी आपण माने कोन 50 तर लिखे कहि सके चलो नेक्स्ट मत देखो मेटियोर्स बर्न ऑफ इन व्हिच लेयर मेटियोर्स आपण माने को लेयर रे बर्न ऑफ होची एबे ही कहली टिके को मेटियोर्स माने बर्न ऑफ को लेयर होचंदी very good that is in the mesosphere that is in the mesosphere जदि आपण माने को कहिबी कोथि पाई meteors माने born हुंदी कोथि पाई मते को what is the scientific reason behind that now ma'am that is the friction at least 50 to 80 kilometer altitude रे समान करो हुए that causes the meteors in the born so due to what now ma'am due to the friction it happens okay next question mate ko the ionosphere is important for ionosphere is important for why ionosphere कोथि पे हमर important radio communication ozone formation को आपण माने बहुत मारुचंती मते लागुछ जाओ that is the कोन ना मैम radio communication so radio communication that is the ionosphere reflects the medium of frequency is denoted as the mf and high frequency कौन होची ना hf that radio waves को हम elongate करछे सपोज आपण मानन को कहिबी रेडियो रे फ्रीक्वेंसी हमर की करूची ना मैम that is the कौन होची डिफरेंट गोटे जोन रहूची एग्जैक्टली ता नाटा माने पडुनी हां रेनफॉल ट्रोपोस्फियर फेर हुआ ठीक है तरंग नहीं जो फ्रीक्वेंसी लेवल टाको आपण माने कोन से यूनिट से यूनियन आपण माने करे कंट्रोल करे दैट इज द समथिंग ए यू थिला ना मने पडुनी जोदरे के आपण माने करे डिफरेंट जेमिति कि आपण करे वीडियो केतिकी फ्रीक्वेंसी भीतर प्ले हबो रेडियो रो फ्रीक्वेंसी लेयर केतिकी से सब फ्रीक्वेंसी को जे हमर जो यूनियन टाको कंट्रोल करे that is the something IAU or कौन थिला प्रेशराइज केले मुंडा खराब हिजो ओके चलो ओजोन फॉर्मेशन कोथरे हुए को मते ओजोन फॉर्मेशन कोथरे हुए
हाँ हाँ आगु जीवा सो ओजोन फॉर्मेशन हमें कौन कहि परिबा ओजोन फॉर्मेशन रिलेटेड को मते ओजोन फॉर्मेशन हैपेंस इन द स्ट्रेटोस्फियर ओके सो जेट स्ट्रीम हेले कौन कहते ना ट्रोपोपॉज टू हमर आसी जाय दैट मींस ट्रोपोस्फियर अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फियर दैट इज रिलेटेड टू द जेट स्ट्रीम एंड रेनफॉल हेले अपन कोन ना मैम ट्रोपोस्फियर सहित ही रिलेट करि पारबे ओके चलो नेक्स्ट मते को नेक्स्ट सॉरी रेनफॉल स्ट्रेटोस्फियर ना सॉरी रेनफॉल स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर रेनफॉल ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर इट रिस्ट्रिक्टेड अछि चलो नेक्स्ट द आयोनोस्फियर लाइज विदिन आयोनोस्फियर लाइज करूची विदिन हर्ज नाही से यूनियन रो नाटा माने पकोछ द आयोनोस्फियर लाइज विदिन the troposphere stratosphere thermosphere exosphere what will be the right answer troposphere तो हबनी that is too low that is the thermosphere कौन बना मैम thermosphere that is 80 to 700 kilometer thermosphere and above the 700 kilometer to up to the पूरा कौन infinity जाए हमारा कौन रहउची ना मैम that is the exosphere okay next मते को which gas absorbs most of the harmful UV rays of the sun already gas कथा पचरचे एठी लेयर कथा पचरिनी so keep it in your mind एठी gas कथा पचरचे ऑक्सीजन त केबे करिबनी that is present in 21 degree sorry 21% हमर रहउची कोन approximately atmosphere clear that absorb the some हम कहि परिबा absorb some UV rays but एठी कोन पचरची ना harmful UV rays है तमे कोन ना that is only the ozone कौन आसीबो ना मैम ओजोन तथापि अपन मानकर मनोज कहउसंदी कार्बन डाइऑक्साइड केमिति कार्बन डाइऑक्साइड हबो ई क्वेश्चन को माने एक्सप्लेन करिया पाइ मते हस ना चल नेक्स्ट मते को व्हिच लेयर रिफ्लेक्ट्स द लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव्स बैक टू अर्थ हमर रेडियो वेव्स केमिति होउची ना मैम वन सेटा कोन होउची ना मैम हमर कोन सब आज भूली जाउची So first हमारे uplink हुए गोटे डाटा then सेटा कौन हुए again downlink हुए that means मझिरे हमारे कौन थाए ना ट्रांसपोंडर रो काम रहउची ताकू कोन ना मैम ट्रांसमिट करिवो सो जो ट्रांसपोंडर रो काम भले की यूज होची को लेयर हम ताकू कहउचे गुड मॉर्निंग को लेयर हम ताकू कहउचे रिलेट करि परिबो की that is present in which layer that is in the ionosphere radio wave सहित ionosphere को रिलेट करछे that's why हमरा रिफ्लेक्ट भी कोठी हबो आपण माने सब बेले भाबबे कि ionosphere जदि हम रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करूचे that means obviously सेटा अपर लेयर को जाई कि पुन थरे वापस आसुतबो राइट but not that ionosphere will be the right answer चलो नेक्स्ट the uppermost layer of the atmosphere is the uppermost layer of the atmosphere को हमें कंसीडर करूचे कोन मते को the uppermost layer को हमें कंसीडर करूचे as what स्ट्रेटोस्फियर तो हबनी obviously that is the exiting point the exit point हमें कहां पहुंचे ना the exosphere that is ना मैम exosphere above 700 किलोमीटर हमर एग्जिस्ट रहउची एटमॉस्फियर क्लियर वेरी गुड चल नेक्स्ट मते को ऑलरेडी सब लेयर विषय स्टार्टिंग में अपन को पॉइंट कहि देथिली पीडीएफ प्रोवाइड कर देबी एंड जो माने लेट जॉइन करूछो से क्लास को टिके वापस करके देखियो नेक्स्ट मते कहता एक्सोस्फियर ग्रेजुअली मर्जेस विथ एक्सोस्फियर धीरे धीरे है कि हमर मर्ज है का से ता पूर्व लेयर सहित ही मर्ज हेतिबो तार पूर्व लेयर की अछि एक्सोस्फियर पूर्व लेयर मते को ऑब्वियसली एक्सोस्फियर ग्रेजुअली मर्ज हेतिबो कहां सहित ना मैम आउटर स्पेस सहित ही हेतिबो पूर्व लेयर में बुझी परछु थर्मोस्फियर कहउछ बट एटा मर्ज हबा आगो को जाई कि एक्सोस्फियर होछ हमर कोन ना दैट इज द बाउंड्री दैट इज द लास्ट लेयर देन से कहां सहित यदि आउटर स्पेस ऑप्शन है नाही ताहले आपण माने कोन थर्मोस्फियर पर्यंत छी clear very good that is the outer space especially हमें कौन कह परिबा the exosphere gradually transition into the outer space the atmosphere become so thin there okay चलो buffering होची ना होनी तो buffering होनी good morning sir class रे अछि okay so greenhouse gases include all except greenhouse gases include all but except carbon dioxide करूची नै को मते yes करूची methane करूची yes and nitrous oxide even b करूची but right कोन हबा ना मैम argon तो गोटे noble gases जे कि 0.93 हमर among all the noble gases so the highest amount of the present in atmosphere then we are considering it is as a argon clear that is chemically
not and that is doesn't absorb the infrared radiation. That's why I say this is not a greenhouse gas. Clear? Those gases have not that much of capability to absorb the what? Now infrared radiation, that is nothing belong to the greenhouse gas category. Okay, chalo next the gas present in very minor amount but important for the photosynthesis is very minute amara achi, but still this is important for the photosynthesis. So basically हमें photosynthesis gas भाबरे ताकू जानिछे. So photosynthesis एटा कहा को relate करूछे वो मते that is present in very minute but still this is known as what? This is the carbon. कौन नाइट्रोजन पुनी असलानी तम मानकर हाँ संतोष पडिहारी केमिति हबो तमरो नाइट्रोजन कोठी फोटोसिंथेसिस सहित कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि बट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर 21% अछि. दिस इज नॉट अ माइनर अमाउंट. सो कोन हबो ना मैम कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज आपण माने जानि चंती रोल कोन रहउछि ना दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. द प्लांट कन्वर्ट करे कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज फॉर्म and oxygen as a byproduct amra kon na bahari side. This regulates the earth's temperature as a greenhouse gas. Clear? Very good. So Paris agreement hela amra kon focuses on the reduces of the carbon dioxide emission. Okay ma'am, sorry. Next the gas essential for combustion is acha combustion pai amra essential gas कोटा रहउची माने संगे संग तमरे जो काम करछ निया लगा काम से काम किए करे कहलो तम कामटा को गैस करे मते दिके कहलो तम कामटा तमे जेंति ए क्लास रो कथा से क्लास रे कथा से क्लास रे करो से जो निया लगा कामटा तम माने करो. सो ए कामटा आउ को गैस भी गोटे करे. सो ए गैस ता आपण माने कहा सहित रिलेट करि परिबे. यस दैट इज विथ द ऑक्सीजन. कहा सहित ऑक्सीजन सहित हम रिलेट करू छे. क्लियर? दैट इज एसेंशियल फॉर द कंबशन एंड रेस्पिरेशन. हाँ राकेश सेटा तो संसार देखो को जाना किए बेसी करती हला तमे आ काई कहउछ झिया मानक ना. चलो नेक्स्ट म देखुआ द स्ट्रेटोस्फियर इज बेस्ट suited for flying aircraft because कोथ पाइन स्ट्रेटोस्फियर रे हमर एयरक्राफ्ट फ्लाई हेई पारुची because of why related what company Swapna Rani. Okay, the stratosphere is best fitted for flying aircraft because it has high temperature, it has no weather disturbances, it has more oxygen or it has less density. So what will be the right answer? What will be the right answer? Yes, that is because of it has the weather disturbance. Kono? Option B, that it has the weather disturbance rahi thai. That's why we can say the stable thai and there is a no turbulence occur and no storms also occur. So this is smoother for the flight takeoff. Clear? No cloud also. Very good. So this is a safer and more fuel efficient also. Okay, chalo. Next which layer is also called as heterosphere. अच्छा heterosphere सहित एबे कहितिले आपण मानकू heterosphere को हमें कोटा कहिबा ना मैम जोटा हमर above 80 किलोमीटर अछि सो हिंस आपण मानकू देई देबी वो मते थर्मोस्फियर हबो भलो से भाबी कि गो देखो स्माइल हमर आंसर देलेनी स्माइल आंसर देलेनी पुनी आंसर काटि देले एंड तमे माने देखो भूल आंसर दोजो स्टिल तमे आंसर रखिचो से गोटे पिला दे आसी कि ठीक आंसर देला पुनी आंसर टा काटि दे एला कौन आ कहबी से देखो पुनी काटि के भूल आंसर दोची स्माइल ये कौन होची तमरा बी फाइनल ना वी गए फाइनल होबो थर्मोस्फियर तो बिल्कुल हबनी एग्जैक्टली हबो कौन द गैसेस अरेंज्ड बाय द मोलेकुलर वेट ताको हमें कौन कहूचे ना मैम दैट इज द लेयर सो एक्सोस्फियर को जदि हमें जिबा भारी कौन हबो ना मोलेकुलर वेट अनुसार थीन लेयर हमर आसी जाय जोटा कि आउटर स्पेस सहित मर्ज हो जाय बी इज करेक्ट पक्का एते कॉन्फिडेंस ठीक है मारी के गूगल सर्च करके हमें कह दियो ओके चलो सो पार्ट ऑफ द हेटेरोस्फियर हमें कौन कहूचे ना मैम पार्ट ऑफ द हेटेरोस्फियर अटेंडा पक्का हुआ मार्बल राकेश माड़ा खाइबा पिलाटा सो दैट इज व्हाट
that is the thermosphere. Clear? That is characterized by the high temperature. The heatest area हमें कौन कहूचे? Heatest area कहूचे कौन? That is the thermosphere. But आपण मानकु जदि पचारे गला part of जदि आपण मानकु part of पचारे गला thermosphere गोटे part heterosphere हबो ना नाही? Yes ma'am. Thermosphere गोटे part of heterosphere. Okay? Very good. चलो. But exactly आपण माने जदि heterosphere कथा पचारिले heterosphere को layer को हमें कहूचे that is known as what ना मैम exosphere. आपण समस्तिंकर आंसर भूल. ओके चलो नेक्स्ट मते को the reason where northern and southern lights occur. The reason where northern and southern light occurs, that is what? हाँ हेटे थर्मासेम अमित मैम राकेशिन ताटिंडा आउ कैलोसिन मैम राकेशिन ताटिंडा आउ कैलोसिन. So the reason where northern and southern lights occurs कौन हमें देखो होचे ट्रोपोस्फियर बिल्कुल नहीं weather processes को कोठी ना ट्रोपोस्फियर सहित हुए. So right answer कौन होगा? That is the ionosphere. कौन होगा? Yeah ma'am, that is the ionosphere that ionize the layer with the thermosphere and characterize the particles. And हमें कहते हैं charged particles ये हमारे कौन था? NIT able condition में था from the solar wind and interact with the atmosphere of the earth. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सहित इंटरैक्ट करते हैं. क्लियर? चल हाँ आसु यार आसु अमित let him do what he want to do. नेक्स्ट चलो which atmosphere gas is a strong absorber of infrared radiation. को लेयर को मैं कहूँ that is the strong absorber of the infrared. मैम भूली गलेनी आउ क्लास करूनी ना मु किछि राकेश मुटा ठीक ठाक अच्छी ताको बिगड़ानी. तो which atmosphere gas is a strong absorber of the infrared radiation. कौन कहूचे? that is ionosphere एटे अच्छी माधव एटे ionosphere ऑप्शन अच्छी एटे गैस कथा पचारी छी जदि लेयर कथा पचारी थांते ताहाले आपण माने ionosphere मारि थांते राइट. सो राइट हबो कौन? that is the carbon dioxide. कौन हबो ना carbon dioxide. क्लियर? चलो नेक्स्ट मते को जेट स्ट्रीम्स आर फाउंड इन मते कहले जेट स्ट्रीम्स हमर कोठी थाए. हां विवेक डायरेक्ट सोइली ब्रश करिनी डायरेक्ट उठी के आसी त मानकर क्लास करू छी चली बनी तमन तो पढिबा दरकार राइट. चलो तो कौन हबो मते को जेट स्ट्रीम हमर कोठी ट्रोपोस्फियर लेयर जेट स्ट्रीम्स फ्लो above the troposphere layers we know that. So रहिबो किए ना मैम स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोपॉज या फिर स्ट्रेटोस्फियर को हमें कहि परबा था above the tropopause or that is the stratosphere. Clear? Very good. So high speed winds कोठी आसे almost 200 to 400 km per hour हमर से लेयर रे आसे. That's why. Okay. मैम टिके ओडिया रे कहिले मिठा लागिबा सुनबा अरे ओडिया रे स्वप्न रानी एडा को केमती बुझेबी क्षमा करो यार मते यार ओडिया मीनिंग एते डिटेल ले मु कहि परिबिनी माने जानिनी कहि परिबिनी मींस मु पानी जाउची मु जानिनी. एबे मु क्लियर हे गली के राकेसी से कोन कैलोस होची से राकेसी. द मेन सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर इज the main source of atmospheric water vapor is main source of atmospheric water vapor हमें कहाँ को consider करूचे? Tell me what will be the right answer? River तो हबनी, lake हबनी. Yes, that is the evaporation from the ocean. हमें evaporation process जानी चाहिए केमिति हुए evaporation हैला condensation हैला सब जानी चाहिए. That is the primary source of the water vapor is the primary source of what rainfall fine. Clear? Water fine. Okay. Evaporation of oceans. Yes. चलो नेक्स्ट मते कुआ the homosphere consists of heterosphere already कहिला एबे मते कुआ homosphere consists of what? The homosphere consists of that is exactly कोन ना मैम lower than the 80 km of the atmosphere. कोन है lower in the atmosphere, uniform in the composition of the gases due to the turbulence and the mixing includes what? The troposphere, stratosphere, mesosphere and the lower thermosphere पर्यंत intermixing हेता.
clear? So right corner about the lower 80 kilometer of the atmosphere. Next चलो, the average height of the atmosphere is about मते को average height atmosphere हमें कितने consider करूचे हमरा normal atmosphere हमें कहूची तो ठीक पर्यंत हमें कोन एरोप्लेन भी फ्लाइट हेई पारुचे एवरीथिंग हेई पारुचे that is convection हमें जोटा को कर्मन लाइन आपण मानु कहितली कर्मन लाइन जोटा कहितली 1600 किलोमीटर से पळेलानी ऑन एंड एवरेज यदि टोटल आपण पछेथांते केते रहूची लेयर डिस्टेंस ताहाले कहितांदा then I can consider about your like answer but एठी कोन पछाची ना ऑन एंड एवरेज पछाची कर्मन लाइन ऊपर को बोले हमें स्पेस बोली कंसीडर करूचे कर्मन लाइन तळ को हमें एटमॉस्फियर कंसीडर करूचे am I clear? The convectional boundary between the earth and the atmosphere and the outer sphere earth atmosphere सहित outer sphere रो गोटे boundary line होची हमर कोन ना कर्मन लाइन clear that is used in the aviation space law according हमें ताको सेपरेट करी की रखी that is recognized by the federation of the aeronautic international clear very good चलो 500 किलोमीटर एबो बोले डिफरेंट टाइप लेयर्स आपण पाई परिबे but still आपण माने कोन 100 किलोमीटर को कंसीडर करंतु कोन एज अ कर्मन लाइन हमर कोटा को 100 किलोमीटर पर्यंत कंसीडर करूची am I clear? हाँ मैम 26 कहूची कौन अच्छे 26 की which atmospheric gas is a strong absorber of the infrared radiation कौन एथरे बुझिया को अच्छी गायत्री 26 रे कौन अच्छी कोडा बुझि परलनी को मते न बुझि वाला कौन अच्छी मते को कार्बन डाइऑक्साइड हमें काहे कहउचे that is the strong absorber of infrared radiation because हमर हीट को ट्रैप करि पारुची ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट that means कौन होची मते को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मीन्स कौन होची आर्गन केमिति हबो रे आर्गन दा तो टोटल इनर्ट गैस ता आर्गन केमिति हबो गायत्री आर्गन हे परिबनी because आमे जानि छे हीट को ट्रैप करूची किए ना मैम that is the infrared radiation that is the strong like a strong absorber of the infrared radiation किए रहउची ना कार्बन डाइऑक्साइड एटी गैस कथा पचाची सो एटा हमर जो कार्बन डाइऑक्साइड होला आपण माने जानि छंती फिर भी कंफ्यूज होछ गायत्री तमे आपण माने को एग्जांपल देइथिनी कोन ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैला क्रिप्टो प्रोटोकॉल हैला ना मॉन्ट्रियल सहित नाही क्रिप्टो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट एंड हमर यूएनएफसीसी रो टारगेट भी रहिची कार्बन डाइऑक्साइड कोन ना मैम रिड्यूशन हबो बाय 2050 सहित तो ताको आपण माने रिलेट करि परिबे ना मैम ये भलो कथा नुओ कोडा भलो कथा नुओ कोडा खराब कथा हला हां तो अगेन तमनु कोची वेदांत क्लासेस रहउची कोन ना मैम महाटेक रो प्राइस 3499 वैलिडिटी रहउची 1.5 ईयर 1.5 ईयर भीतर स्टेट रो जते भी एग्जामिनेशंस आसीबा या भीतर आपनकर कवर फेसबो इंक्लूडिंग दिस पीओ एंड उत्कर्ष बैच नेक्स्ट मते को दैट इज 1 year जाय वैलिडिटी रहउची दैट प्राइस इज 1499 दैट इज द द्रोण 1.0 फॉर द आर्ट्स पीसीएम एंड सिटीजन बैच क्लियर दिस इज फॉर द वेदांत टीचिंग चैनल्स am I clear गायत्री आगे मैम थैंक यू सॉरी होला हाँ नारायण सॉरी होला तमने ते जल्दी सोई की उठुछ तो सेति पई क्लास सॉरी जज बुझिला तमने टिके लेट रे उठिबो ना कहू ना सब नंबर दियो मु तमने को उठेबी तापरे क्लास करिवे बुझिला उठे की क्लास करिवे थैंक यू सो मच मैम 24 टा टिके आउथ है अच्छा हेटेरोस्फियर थी आसी के अटकिच हेटेरोस्फियर थी अटकिच तो मते को व्हिच लेयर इज कॉल्ड एज द हेटेरोस्फियर हम एक्सोस्फियर को काहे की कंसीडर करूछे बिकॉज़ एक्सोस्फियर थी ओटे थिन लेयर आसु जोठी जाई कि से आउटर स्पेस सहित कोन ना मैम मर्ज हो जाउची दैट इज द लेयर हेटेरोस्फियर काहे की कहूचे ना मैम डिफरेंट टाइप रो मिक्सचर हमें सेठा पाई परिबा नै होमोस्फियर काहे हमें डिफरेंट ट्रोपोस्फियर हैला सॉरी हमर स्ट्रेटोस्फियर लेयर को हम होमोस्फियर केमती कहि पारुचे कारण डिफरेंट लेयर्स हमर जो गैसेस रहउची तो इंटरमिक्स हे की रहउची हमर ऑलमोस्ट थर्मोस्फियर जे रहउचंती जो माने ताकर वेटेज अकॉर्डिंग धीरे धीरे तळगु रहउचंती
आमर इनर गैस जोड़ा बहुत ही लाइट वेट थांती हीलियम है आर्गन है माने सब ऊपर थांती बट एक्सोस्फीयर को हम हेटेरोस्फीयर काहे कहू छै एठी किछि डिफरेंट टाइप रो गैस ही आपण पाई परिबेनी कारण से तो पूरा डायरेक्ट आउटर लेयर हे गला जोटा कि देखि स्पेस सहित पाई जाउछि बुझिलो के पचरितला क्वेश्चन नारायण के मैम आप रे केते बेले क्लास होउछि केते बेले क्लास होउछि एबे तो आप रे कोन ओटे क्लास चली थिबो रिवीजन करी के आसीबे मैम हां डेफिनेटली करी के आसीबो होउनी कि क्लास आ त माने सब जाउ छ कोड राती 10टा क्लास रे क्लास तो होउछि बट होपफुली राती 10टा क्लास त मानकर कैंसिल करबा ऊपर मु अछि बिकॉज आपण माने क्लास रे प्रेजेंट रहउनांती एग्जाम तो अछि बहुत ही कम दिन कोन करू छ तम माने तमे ही जानि थिबो कोन आ तम मानु कहिबि रे पिला आसिले तो हबो क्लास हां पिला आसिले क्लास काहे होबोनी हबो चलो सेति की पढ़ो बहुत बढ़ी देलो बुझिलो आज पई सेति की पढ़ो चलो अगेन बाय बाय गाइस पूरा मस्त रे रुह बिंदास रे रुह पाठ साठ किछि पढ़िया दरकार नहीं खाली गणेश को पूजा करो एंड सरस्वती को पूजा करो देखियो सब एग्जाम तमरा क्रैक हेइसो हैला चलो बाय बाय टेक केयर एंड most of all do take care of your parents first this should be your first priority they are our life goal so never get hurt okay